या अभी 6 minutes till the market opens. तो हमारे पास फ्राइडे को जब हम लोग ट्रेड कर रहे थे तो हमारे पास सही है, फ्राइडे को हम लोग जब ट्रेड कर रहे थे तब यहाँ से ये बाय जोन था, नेक्स्ट बाय जोन ये था, मेरा एग्जैक्ट टारगेट 540 था। तो हम लोगों ने 540 टच किया जो कि मेरा प्रोबेबिलिटी मतलब एग्जैक्ट यही टारगेट था जिसको मैं एम कर रहा था, और उसके बाद हम लोग वी आर मूविंग डाउन फ्रॉम दैट पॉइंट। अच्छा, ये तो हमारा हो गया इसका। उसके अलावा जो है मारियो, व्हाट वाज आवर टारगेट ऑन फ्राइडे, exact target on Friday on Nasdaq? You remember that? That was the 540 area, if you remember. Let me just okay, so the next thing हमारे पास जो था, next thing was BTC. If anyone remembers this point, 280 point, do you remember this point? तो ये तो हमारा मैंने बॉक्स ड्रॉ करके जो दिया था, दिस वाज द क्राइटेरिया, एंड आई सेड कि आई डू नॉट वांट टू शॉर्ट दिस प्राइस। तो हम लोगों ने यहाँ से वी आर गेटिंग अ गुड एस रिएक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट, एंड आई ऑल्सो मेंशन कि दिस इज गोइंग टू बी रेलिवेंट फॉर सम लाइक फॉर द नेक्स्ट मंथ प्रॉबेबली, राइट? सो ये हमारे पास वी गॉट अ वेरी गुड रिएक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट। बिटकॉइन का यार देखो ये है कि ये पॉइंट को अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर लो। 270 is the area of interest. You should have it on your chart, and I do not want to short it as long as we are above this price. तो जब तक इससे ऊपर ठहरे तब तक शॉर्ट नहीं करना। इसके ऊपर टाइट स्टॉप्स, इसके नीचे टाइट स्टॉप्स लगाए जा सकते हैं, बट विद अ गुड वैलिडेशन, राइट? सो हमारे पास Nasdaq का, if you remember this point, okay, on Friday, this was the area of interest. If you remember this point, the next one was this, and I was aiming for 540. So we went to 540 exactly, then we are moving back from that point. So this is what's on Nasdaq, and the next was on gold. तो गोल्ड का हमारा ये था कि आई डू नॉट वांट टू शॉर्ट गोल्ड। यू रिमेंबर दिस पॉइंट ना? वेरी गुड, बट एट you see how precise it was, and I mentioned in our like last Tuesday I said so that was good. Another thing was on the dollar index. If you remember on the dollar index, right? You remember that point? Okay, I'm not making this up. Like in hindsight, anyone can say I'm talking about in hindsight, but those who are watching me knows that I like exactly this is what on the index. I do not want the to go long index. We are at the area of interest and we might react from that. So that there's that the market opens. Let's just wait 2 minutes. And today's area of interest for the Nasdaq is what I've drawn right now. Oh, the stream is really bad, right? Mine it is also not working properly for some reason. Okay, so this is the point you should have your chart today. 19,727, 19,372, 19,256. Just draw it on your chart and forget about the narrative. Basically what I'm looking at, this is the area of interest. What is the breaking point overall? Okay, I'm not interested in going swing longs as long as we are above 145. Let's move this
to 145. Okay, so now this area, this specific area, जो ये वाला point है ना यार 145 का, as long as we are above this point, I'm looking for from this point, from basically you can say the high to this low. Okay, as long as we are within this 300 points or 400 points range, I'm looking to go swing longs, no swing shorts. So I'm using this support area as the area of interest to for me to be interested in getting longs. Okay, it can probably move down, come to this point, may react to this point or not, depends, but this is the general criteria I'm watching. So keep this in mind. Keep this in mind. It can just come down for sure, but I'm generally speaking not interested in going I can go swing short, I'll day trade short. Keep one thing more interesting, very very interesting point is if you open up your weekly chart, right? If you open up your this chart, let's go for 4 hours chart. Okay, if you mark this level, okay, as this point, you're following with me? So if you mark this level, we have gotten a breakout. It may turn into a complete fake out. Keep this in mind. So just keep this in the back of your head. If you move below 146, I'm going down. So from this point to the higher time frame structure, तो इसका जो हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर है ना, ये ध्यान रखना कि ये कंप्लीटली फेक आउट भी हो सकता है into a fake out because it's a angle. So we broke out from that zone. It can completely turn back down from 146. Below 146, I'm all interested in going short. So keep that in mind. Keep that in mind. We are coming to the area of interest now. मैं रिमूव कर रहा हूँ ये ड्राइंग्स अभी फिलहाल के लिए. Ooh. Oh, you fucked, bro. I know the stream was lagging, but did you completely miss out on the? You never did. Do you understand the narrative, or was it really distorted? You guys understand the narrative, or was the stream really distorted for you to understand, or was it difficult? Just asking. Can anyone in the chat tell me? Nice. That's nice. 371 is interesting.
Take a note of this. First 5 minutes about to close, gapping down. Okay, if we do not get a good reaction, we might as well move to this point, 146, but this is a very crucial point, the breaking point of everything. So if we just moved it, like I'm not executing obviously right now because it's not showing any signs of strength. So I'm watching if the price would react to this point, or if not, so obviously it's coming to this point. Then I'll be watching how the price will react to this. If it's completely not responsive to basically the end point is 146, we have a lot of area of interest from this range 364 to 100, this 100 points range, right? So if it's just moving down, so I can assume that we are making that higher time frame fake out. Keep that in mind. The first 5 minutes closed. Let's just remove this point. Okay, Mario just mark 466.39, 466. Let's go for 38. That's the area I'm watching as a. You gotta be very careful with this one. We are reacting from the 50%, but you have to be very careful. $373 and 337. This is a spread from this point. Come back to this point. Okay, ideal case scenario for the bulls. Okay, I want the price to move above 446, 400, and basically these two lines. Okay, I want the price to move above so we can move further up today. I'm talking about in terms of day trades. So if not, then I can expect some sort of chop, then we move back up. So
This was the Friday's buy zone. Like it was really perfect from this point to 540. Really perfect trades. Three minutes till the first 15 minutes will close. If the price comes above 75% of the gap, then it will be really good for the bulls. The above the 50% of this gap, you cleared out 38, 39. This one's remaining. Okay, consider this line as the higher time frame flag line, which I mentioned, that the fake out line. It goes from this, passes through this. That's nice. The first 15 minutes closed.
That's nice. Three hundred and 386. Next one, 386 should stay above this point. This 386. Oh, above this we are good to go towards the upside. Above. The next one would be 424. 420, just at the high of this point. Okay, but I need the price to stabilize above 386. Okay, use this as support, then I can use this specific line 72. Would be putting my stop loss below 72, but not now. I'll be more comfortable basically buying it if we move above this point, above the 50% of the gap. Okay, that's nice. 24, 424. Stabilize above this point. Above this point, the next one is 424. Let's eight 12, yeah, 8 7. Use this as support. Move back to 24 and 42. Let's mark this yellow.
425. We have 6 minutes till the 30 minutes close. uh, 424 probably will be rejected now. So 50 points, nice. Okay, 30 alag points. For us to be more interested in longs or further continuation, I want the price to move above 442 and not get stuck at this range. Okay, so this is the point where I'm expecting a rejection, so that's why I'm saying, okay, the next point was 424. I want the price to move above 442 for me to be interested in continuous longs. There we go. There we go. Nice. Nice. That's really nice. Okay. So moved above 442. What? 70, 80 points. Nice. Basically, it can get between this whole range, basically these two white lines, and 452, 425, or to be precise, 441, 425.
तो हम लोगों को देखो वहीं से रिजेक्शन मिल रहा है. वी आर गेटिंग अ गुड रिजेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट. Within 1.5 minutes, the 30 minutes is going to close. I want the price for continuation to move above the 50%. The new hour. This is the new hour candle. Keep this in mind. We can get complete rejection of this point, the yellow box. So that's why I'm saying I want the price to move above this whole range, which is a very tight range for 24 to 50, basically 25 points range. For me to feel more comfortable going like long again. Let's go short. Let's go short. No, not now.
Probably, yes, it's a short. This is a good short. Back to this point. $371. Okay. From there to there, then this was the rejection point. Now was the short again, stuck between this range and this range. So we might to this point again. That would be 372. Yep. Probably if we keep getting rejected off of that point. Okay. Yeah, if we move above the white line, I can take another further long. Move above this white line and the high. Getting there.
For some reason I think that if I were to short this, the risk to reward would be good. This is a problem. 11 points risk is a problem. From this point to that, what is this? 6 points. How many points is 12 points? Can I short this? Yes, I can. But I'm not going to. My stop would have been here at 28. But I'm not going to because of this point. Ooh, 409. Ooh, that's so good. 409. Can I go long on this? Yes, 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 yes. But I need some confirmation. I do want to go like long on this so bad, but I need confirmation above this yellow line. So that's a good as criteria because overall it's a very tight range. Okay, this whole range like 12 points to downside, 15 points to, so basically what 20-25 points, right? So even if the price comes to this point and I buy it, that would be a good buy because I would have a good risk to reward and a safer trade than that, or what I'm trying to do here. So this is all a rejection point. I can go short from this point, but I'm not going to because of this point. So check this out. So you know,
20-30 points from here. Sure does look it wants to go right. But this is the new 15 minutes. भाई मैं इंडिया में नहीं हूँ, मेरी सेवी की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ही मैं सिग्नल्स नहीं दे रहा हूँ ना, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम बाय करो या सेल करो। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। सो okay, come back to this point. And now if we go up, I'll buy it. But above the yellow box.
ऑल इज़ वेल, कैसे हो यार? ये लेवल्स मैंने स्ट्रीम के स्टार्ट में दिए हैं ना, ये वाले। फर्स्ट ये कर लो, दूसरा वाला हमारा यहाँ से बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ अ बाय जोन था। ये रिजेक्शन पॉइंट था बॉक्स 442 से लेके 424। तो हम यहाँ पे आए, उसके बाद यहाँ से 30-40 पॉइंट्स निकाले। नेक्स्ट पॉइंट मैं ये वेट कर रहा हूँ, इफ़ वी मूव अबव दिस पॉइंट तो आई एम ट्राइंग टू बाय दिस, टेक इट अप। बट येलो बॉक्स से ऊपर जाना ज़रूरी है। तो अगर हम लोग इफ़ वी स्टे बिलो दैट येलो बॉक्स जहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, देन वी कैन बेसिकली चॉप अराउंड इस ब्लू एरिया के अंदर और इस येलो बॉक्स के अंदर। सो दैट्स द होल क्राइटेरिया फॉर नाउ। यहाँ से 30-40 पॉइंट्स थे टेकन आउट, बट ये है कि कॉन्ट्रडिक्शन है। आई वांट द प्राइस टू मूव अबव 446। मैं इंटरेस्टेड हूँ लॉन्ग्स में ओवरऑल। उसके अलावा यार ऑल इज़ वेल तुम्हें मैंने हाँ 280 का लेवल दिया था बिटकॉइन का, तुम्हारे चार्ट पे है कि नहीं है? मैं यार इस ये एग्जीक्यूट कर दूं। एफ हेड किंग कैसे हो यार? ऑल इज़ वेल, ये देखो ना, मैं जब तक ये हमारा ट्रेड बनता है तब तक ये देखो, ये वही लेवल्स हैं जो काम आ रहे हैं ना पिछले हफ्ते से, 2 हफ्ते से अब तक। तो ये जितने लोग हैं सबको पता होगा, ये दो लेवल्स मैं बोलते रहता हूँ। 505 और 278, तो बेसिकली 280। 280 का सुबह तुम्हारे पास बड़ा अच्छा ऑप्शन था बाय करने का, तुमने पता नहीं किया है कि नहीं था। उसके अलावा तुम्हारे पास ये दूसरा लेवल दोबारा अपॉर्चुनिटी आ रही है, इफ़ यू मूव अबव दिस पॉइंट तो यू श्योर कैन बाय दिस। तो ये ध्यान रखना। मुइज गुजर कैसे हो यार? बॉय इतने दिन कहाँ थे? तो अभी अभी का ये है कि ये देखो हमारा, ये तो आज का छोड़ो, पिछले पूरे हफ्ते की बीस जितनी भी सारी स्ट्रीम्स थी, दे वर लाइक टू द टिक परफेक्ट। ये हमारा फ्राइडे का नैरेटिव था। फ्राइडे को छोड़ो, एक ये देखो इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, ये हमारा कौन से दिन का लगा हुआ? थर्सडे का। जाके थर्सडे की स्ट्रीम देखो, ये बाय जोन था हमारा थर्सडे का, और हम लोग इस जगह को टारगेट कर रहे थे। खैर, ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारा थर्सडे के बाद फ्राइडे चेक करो। फ्राइडे को हम लोगों ने इधर बाय करने की कोशिश कर रहे थे, और इधर इस जगह पे ब्लू डब्बे के अंदर बाय करने की कोशिश कर रहे थे। 540 का लेवल था, और उसके बाद 540 को जैसे टच किया, वी आर बैक डाउन टू दिस पॉइंट। आज का जो है हमारे पास ये वाला बाय, अब ये वाला बेसिकली बाय जोन था। ये येलो जो डब्बा बना, ये रिजेक्शन पॉइंट था, तो वी आर गेटिंग रिजेक्टेड फ्रॉम दैट पॉइंट। 15 मिनट के बाद बाय करूं यार? बिटकॉइन का अलग हिसाब है। बिटकॉइन का अलग हिसाब है, उसकी कोई इंट्री ट्रिगर ढूंढो पहले, तो फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करना है उन लेवल्स के ऊपर। तो मैं बेसिकली यहाँ से बाय करने में इंटरेस्टेड था, इस जगह पे 224 तक। तो वी गॉट टू दिस पॉइंट, वी चॉप्ड अ लिटिल बिट, और यही रिजेक्शन पॉइंट था। तो आई वांटेड द प्राइस टू मूव अबव 440। मैं फिर और दोबारा बाय करता, लेकिन यहाँ पे मुझे सेल करना पड़ा क्योंकि वी हैड दिस प्रॉब्लम। सो अभी वहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, मोर टूवर्ड्स बुलिश साइड देन बेरिश।
हाँ जी, बेरिश है, लॉन्ग टर्म बेरिश है। ये जो 280 का है ना, 280 से अगर ऊपर ठहरता है तो फिर हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन ये 60,000 से लेकर समझो 58,000 तक का प्रॉब्लम है। सो आई वांट द प्राइस टू मूव अबव, बेसिकली स्टे अबव 280 ऑन बीटीसी। मैं एज्यूम कर सकता हूँ, क्योंकि वो ऊपर जाए ना जाए, मैं अपना मतलब कि ये होता है कि अपने ट्रेड लगा के ना स्टॉप लॉस तो ब्रेक इवन पे रख ही सकता हूँ, क्योंकि वो जगह सेफ है। तो फिर हम लोग एज्यूम कर सकते, होप कर सकते कि ब्रेक दैट ट्रेंड टुवर्ड्स द अपसाइड। और 280 के पास वो पोटेंशियल है कि इट कैन रिवर्स द होल ट्रेंड। जैसे हमारे पास पहला जो था ना लेवल जी वाला, तुम अगर देखो उसको तो उस बात को टाइम हो गया है। ये देखो, ये देखो, जब ये इस जगह पे थे, मैं तुम लोगों को फ्राइडे को क्या बोल रहा था? सैटरडे का दिन था, मैंने बोला यार ये बॉटम है, यार ये बॉटम है, यार ये बॉटम है। अभी देखो, अभी लग रहा है ना बॉटम। तो उसी तरह से बस ये जो एक है ना, ये कभी प्रिसाइज हो जाएगा, कभी चॉप अराउंड करेगा, तो ध्यान रखना। लेकिन अबव दिस पॉइंट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग दिस। अच्छा, ऑन नैस्डैक कमिंग बैक, तो ये जो येलो से स्ट्रीम के स्टार्ट में ड्रॉ किया ना, आई सेड कि दिस कैन गेट रिजेक्टेड ऑल द वे बैक डाउन। तो हम लोग ये कर रहे हैं कि ये हमारा रिजेक्शन पॉइंट है, ये हमारा बेसिकली सॉर्ट ऑफ अ सपोर्ट पॉइंट है। 6 तक मैं स्विंग लॉन्ग्स देखता रहूँगा, 19,146 तक। Yes, I can day trade it short for sure, but यार मैं एग्जीक्यूट करता हूँ ना, बहुत सारी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करता हूँ, उसमें से कुछ दिखा। ये है कि मेरी फ्राइडे सैटरडे जितने पिछले हफ्ते की आधा टाइम मैंने एग्जीक्यूशंस अपनी दिखाई हैं। बस ये है कि जब स्ट्रीम पे ऑब्वियसली नहीं होता हूँ तो फिर नहीं बता सकता ना यार। हाँ, सैटरडे संडे लाइव नहीं आया, बस किसी काम में लगा हुआ था। तो ये जो मैं ट्रेड्स दिखा रहा हूँ, ये सारी मैंने एग्जीक्यूट की थी लाइव सारी। ये भी एग्जीक्यूट किया, ये भी एग्जीक्यूट किया, थर्सडे के दिन भी सारा एग्जीक्यूशन शो किया। नहीं नहीं मोइज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, अल्लाह का शुक्र। पूछ रहा हूँ कि बीटीसी पर आप लाइव ट्रेड नहीं लेते? यार बीटीसी मैं बस ट्रेड लेता हूँ, लेकिन ये है कि मैं इस वक्त पे जब आता हूँ ना लाइव, मतलब इस ये जो टाइम है सारा लाइव, ये सारा है न्यूयॉर्क ओपन का ना, तो ये 1 घंटा 2 इसका होता है। क्योंकि बिटकॉइन तो हर वक्त ही बस मूव करता रहता है, ये मेरा बेस, इसके ऊपर मैं स्पेशलाइज करता हूँ नैस्डैक पे। बिटकॉइन हाँ इधर उधर ट्रेड्स ले लेता हूँ, बट वो
टाइम नहीं है उसका स्पेसिफिक, वो जब दे दे तब दे दे, ऐसे समझ लो। पर ये जो होता है 6:30 बजे समझो इधर, और हमारे पहले 2 घंटे तो 9:30 बजे वहाँ के, 11 बजे तक न्यूयॉर्क के ट्रेड करता हूँ। ओके, नेक्स्ट अभी ये है, ये जगह देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग एट दिस पॉइंट 266. Can I go short? Yes, I can go short, but I'm not going to. See, 266 is the area I'm looking at for the price to gravitate towards next. और फिर उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन या एरिया ऑफ इंटरेस्ट में देखूंगा। नेक्स्ट हमारे पास है, तो फॉर अ रीकैप, यहाँ से हम लोगों ने बाइंग में इंटरेस्टेड थे। दिस वाज अ रिजेक्शन पॉइंट, येलो हमने अभी ड्रॉ किया हुआ है, ये चेक करो। हम लोगों ने एक दफ़ा भी ऊपर जाने की कोशिश की बट नहीं जा सके। नाउ वी आर गेटिंग रिजेक्टेड ऑफ दिस पॉइंट। अभी क्योंकि हमारे पास वी आर इन द फर्स्ट आवर क्लोजिंग, तो हमारे पास जो क्लोजिंग हो गई है, नाउ आई एम मोर इंटरेस्टेड। बेसिकली मैं अभी लॉन्ग्स नहीं कर सकता हूँ, आई एम नॉट अलाउड टू गो लॉन्ग। पहले मुझे इजाज़त थी, इधर लॉन्ग जाने की इजाज़त थी, लेकिन क्योंकि ये अभी इतना टाइम हो गया है हमें, तो अभी मैं लॉन्ग नहीं जा सकता। आई कैन ओनली गो शॉर्ट टारगेटिंग दिस पॉइंट। पर मैं लॉन्ग फिर कब जा सकता हूँ, दैट्स द पॉइंट ना। जब हम लोग इस 2 वाइट लाइंस नज़र आ रही हैं, या आप लोग ये कर लो कि 424 से लेकर 450 तक की एक रेंज बना लें, और अगर तो हम लोग इस रेंज से ऊपर चले जाते हैं, तब आप ये सोच सकते हैं कि यार मैं लॉन्ग कर रहा हूँगा, या मैं खुद लॉन्ग्स को नज़र में रख रहा हूँगा, स्ट्रीम पे होऊंगा या नहीं होऊंगा, डिपेंड करता है। लेकिन मैं अगर चला भी जाता हूँ तो इस पे नज़र रखना है। इफ़ यू मूव अबव दिस पॉइंट तो हम लोग लॉन्ग्स कर सकते हैं, अदरवाइज लॉन्ग्स में मुझे इजाज़त नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड और नॉर एम आई अलाउड टू गो लॉन्ग। तो आज का दिन हमारा इसे चॉप में भी गुजर सकता है। क्या पता हम लोग ये करें कि ये देखें, जो लोग अभी स्ट्रीम को शुरू से नहीं देख रहे, इट्स फॉर देम। ये तुम देख रहे हो, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये वाली, ये जो ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ की हुई है, ये ट्रेंड लाइन अगर तुम इसको पहले 10 जुलाई पे लगाओ, दूसरा वाला तुम बॉटम जो है 2 अगस्त पे लगाओ, तो इट्स अ कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल। तो हम लोगों को इस जगह से एक बहुत ही फिट किस्म का ब्रेकआउट मिला। ये नज़र आ रहा है तुम्हें, ये देखो, ये प्राइस अगर इधर जाती है तो ये वाला जो एरिया है सारा ब्रेकआउट मिला। ये कम्प्लीटली इट कैन टर्न इटसेल्फ इनटू अ फेक आउट। सो हायर टाइम फ्रेम पे ये ध्यान रखना कि ये कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल है, विच कैन ईजीली गेट लाइक चॉप में कन्वर्ट हो सकता है, हायर टाइम फ्रेम चॉप्स। तो अच्छा, वी आर कमिंग टू दिस पॉइंट नेक्स्ट। ये लाइन है, ये वाली जो पतली सी हल्की सी लाइन नज़र आ रही है ना, ट्रेंड लाइन, ये वही हायर टाइम फ्रेम की लाइन है। तो अगला जो पॉइंट है मैं जिसमें इंटरेस्टेड हूँ देखने में, वो है 267। और एक और चीज़ बताता हूँ, 19,146 का जो लेवल है, ये बस अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिए। और ये क्या सिग्निफाई करता है, इसकी ये सिग्निफिकेशन बेसिकली है कि इट्स, you can think of it like the balance of power, right? Below this point, I need the price to stay below this point for some time to for me to be interested in swing shorts. तो फिर the balance of power will be on the side of the bears once we move below 145. Above this, हमारे पास जो balance of power है, it's towards the bullish side.
तो ये बस अपने चार्ट पे ड्रॉ करना 146, ये यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है, 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 एंड लास्ट एंड फाइनल 146 इटसेल्फ से रिजेक्ट हो के आप ऊपर जा सकते हैं। लेकिन द मोमेंट वी मूव बिलो 146 और फिर मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, समझे 2 घंटे 3 घंटे, देन आई शॉर्ट और जा सकता हूँ स्विंग शॉर्ट। मुझे तुम्हारे पास था तो सही। नो लॉन्ग्स। तुमने मुझे एक दफ़ा बोला था कि आपका नंबर, हाँ ना, मेरा नंबर लिया था मैंने। मैंने तो नहीं लिया कभी भी। मैंने एक दफ़ा यहाँ पे शेयर किया था, आपने बोला था कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। नहीं यार, देखो ना यार, 0333842790 8, 0333842790 8। ये वाला नंबर था, चलो इस पे लिखता हूँ। 0333842790 8, 908, 0333842790 8, ये था। स्क्रीनशॉट लेने ले लो, मैं फिर हटा रहा हूँ।
हाँ यार, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा ना शिटी हुआ हुआ है, सो ये पहले से आ रहा है और ये बहुत इरिटेटिंग है। रुको। 375। 'What do we have here? Ooh, that's nice. '62. कैसे हो यार?
फारूक, मैं फिट यार, तुम बताओ। How many points risk? Basically, it's how much points will be the risk. 19 points. This is a very small trade, just a scalp I'm trying to take. If we move above this point, I'm gonna just cut this trade. So let's see. Putting my stop loss at break even. Yeah, it can. If it knocks me out, I'm just gonna end the stream and I'm gonna go. This is a very quick scalp, but the narrative will still be the same. Okay, narrative will still be the same. I have already taken out like 30-40 points from the previous trade, so गुलाम यार, मैंने पता है कोई 5-6 दफ़ा मैं एक्सप्लेन किया। थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, मैं स्ट्रीम बंद करता हूँ ना, तो तुम बीच में से लगाना और देख लेना। मैंने 4-5 दफ़ा रिपीट किया है, तो वही प्लान रहेगा, नैरेटिव वही रहेगा। अच्छा, इफ इट नॉक्स मी आउट, प्रॉबेबली विल नॉक मी आउट, आई एम गोइंग टू cut the stream, or basically this is what I'm looking for as for now. If then I'm explain, I'm gonna go. This is leaving this shit behind, which is not really good. My initial risk was 41. I will probably close at 41, right? Because we have an imbalance. So let me just cover the risk. $39, $38, $46, and I'm gonna close this trade now. My initial risk exactly was 41. So okay guys, गुलाम यार, ऐसा है कि ये बस इस बॉक्स का ये सीन के अपने पास 146 रखो, और अबव दिस पॉइंट यार, इतना तो तुम्हें अभी तक समझ आ गया होगा कि मैं स्विंग लॉन्ग्स या स्विंग शॉर्ट्स के बारे में क्या कहता हूँ। तो बेसिकली हमारा अबव 145 हम लोग स्विंग लॉन्ग्स ले रहे हैं, अबव 145। तो हम लोगों को ऐसे सोचो कि कोई भी तुम्हारे पास सपोर्ट है ना, कोई फेयर वैल्यू गैप है, कोई भी कुछ भी चीज़ है, तो अबव 146 वो तुम्हारे मतलब इट्स कैन रिएक्ट मोर टुवर्ड्स द बुलिश साइड देन टुवर्ड्स द बेयरिश साइड। तो अगर इफ एज लॉन्ग एज वी आर अबव, समझो यहाँ से रिजेक्ट हो सकते, लास्ट हमारे पास 146 आएगा। 146 से नीचे जाते ही हम लोगों का स्विंग शॉर्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एज लॉन्ग एज वी आर अबव 146 स्विंग लॉन्ग्स, तो उस दौरान हमारे पास जो पहला सपोर्ट है ये वाला है, मतलब उसके ऊपर भी बहुत सारा सपोर्ट है, लेकिन दिस इज़ द एरिया ऑफ इंटरेस्ट जनरली टुडे विच इज़ रेलिवेंट। तो 722 से 265 कर लो, ठीक है। तो अभी मैं शॉर्ट सिर्फ कर सकता हूँ, और मैं लॉन्ग कब कर सकता हूँ, यहाँ से हम लोगों को ये बाय जोन है बेसिकली। मैं शॉर्ट इसलिए कर रहा था क्योंकि ये बस इस जगह को एम कर रहा था, सही है। अच्छा किया मैं निकल आया हूँ, लेकिन ध्यान रखना अभी शॉर्ट सिर्फ कर सकते हो, लॉन्ग्स नहीं कर सकते हो। ये जो मर्जी इधर करी है, तुम्हें सिर्फ समझो चॉप कर रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। इफ़ यू मूव अबव दिस प्राइस, एक्सट्रीम कर लो। लेट्स, पहले तो मैं ये कह रहा था येलो बॉक्स 425 से लेकर 452 अबव दिस पॉइंट, तो फिर हम लोग लॉन्ग्स कर सकते हैं ये यहाँ से कम्प्लीटली। अच्छा, एक और मज़े की बात बताऊँ, अगर तुम्हें स्कैल्प लेना हो ना, तो तुम
चॉप अप मत होना, ये अपना ध्यान रखना, चॉप अप मत होना। ये नहीं है तुम बोल रहे हो साल ने बोला था भैया एग्जैक्टली जाना चाहिए, ये इसी तरह से रिएक्ट करता है जिस तरह से अभी कर रहा था। तुम यहाँ पे थे तो हमने बोला ऐसे ऊपर जाएगा तो बाय करूँगा, तो ज़रा से नीचे इससे स्टॉप रख सकते हो, इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन शॉर्ट 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 एज लॉन्ग एज ये स्टे बिलो दिस पॉइंट, तो ध्यान रखना, टाइट स्टॉप रखना। इफ़ अगर बाय करना हो ना, इधर से फ्रंट रनिंग करनी हो इस जगह को, तो सिर्फ ये कर सकते हो कि टाइट स्टॉप बिलो द प्रीवियस कैंडल लो। गॉट इट? ओके भाई, मैं जा रहा हूँ तो और काम शाम करना है। ओके यार, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं दोस्तों।